Sarasatar Sarasman Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Ananda Koti Vaishnava ki jai. Acharya Srila Thakur ki jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivedanta ki jai. Sri Radha Krishna Gaur Bhatnath Sam Kunda Radha Kundi Bhajam ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Navadip Dham ki jai. Ganga Mai ki jai. Yamuna Mai ki jai. Tulsi Devi ki jai. Bhakti Devi ki jai. Navaveda Bhaktivedanta ki jai. All glories to their Swami. All glories to their Swami. All glories to their Swami. Thank you very much. The following is a lecture given by His Divine Grace, A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on the 5th of May, 1974, in Bombay, India. Today is the appearance day of Lord Nrsimhadeva. It is called Nrsimha Chaturdashi. So, I am so pleased that within such a short time, these boys have nicely learned how to play, and especially I have to thank Mr. Hiranyakasipu. Mr. Hiranyakasipu has played his part very nicely. So, this is very instructive. A struggle between the atheist and the theist. This story of Prahlada Maharaj is eternally true. There is always a struggle between the atheist and the theist. If a person becomes God conscious, Krishna conscious, so he will find many enemies, because the world is full of demons. What to speak of the devotee of Krishna? Even Krishna, when he personally came, he had to kill so many demons. There was his maternal uncle, his mother's brother, very keenly related. Still, he wanted to kill Krishna. As soon as any son was born to Devaki, immediately he killed, because he did not know who will be Krishna. The prediction was that the 8th child of his sister will kill Kamsa. So he began to kill all the children. At last Krishna came, but he could not kill Krishna. He was killed by Krishna. So, nobody can kill God. The demons, godless society, they simply want to kill God. But actually, God is never killed, but the demon is killed by God. That is the law of nature. This is the instruction from Prahlada Maharaj's life. We can understand that, as it is stated in the Bhagavad Gita, Mrityu sarva harascha aham. In the Bhagavad Gita it is said that I am also death in the shape of taking away everything, whatever you possess.
We are very much proud of possessing material things, material acquisitions. But when Krishna comes, Prahlada Maharaj saw, Hiranyakasipu, his father also saw, Nrsimhadeva. This Hiranyakasipu was very clever. As the materialist scientists are very clever. Cleverly they are inventing so many things. What is the idea? The idea is we shall live forever and enjoy sense gratification more and more. This is called atheistic advancement of civilization. The Hiranyakasipu was typical materialist. Hiranya means gold and Kasipu means soft bed, cushion. The materialist person, they are very much fond of gold and enjoying sex. That is their business. Hiranyakasipu is the typical example of this materialistic person, and Prahlada Maharaj, Prakishtarupena Allada. Allada means transcendental bliss, Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitali. Living entities, real identification is Prahlada, blissfulness. But on account of material association, we are in miserable condition of life. So this Hiranyakasipu wanted to become immortal, and he underwent penances, severe penances, so much so the whole universe became tremble. So that Lord Brahma, what do you want? So he wanted to become immortal. Lord Brahma said that although I have got very long duration of life, the duration of life of Brahmaji is stated in the Bhagavad Gita, Sahasra Juga Pajyantam Arhajat Brahmano Vidu. Sahasra Juga, one group of Juga, Satya, Trita, Dapur, Kali, it becomes 43 lakhs of years. And multiply this 43 lakhs of years by 1000. That duration of time is Brahma's 12 hours, one day. Sahasra Juga Pajyantam Arhajat Brahmano Vidu. So that Brahma, who lives for millions and trillions of years, still he has to die. Janma Mrityu Jara Vyadhi Dukkha Doshana Darsana. Wherever you go within this material world, either in the Brahma Loka or in the Patal Loka, you have to die. That is the problem. Krishna says in the Bhagavad Gita, real problem is Janma Mrityu Jara Vyadhi, birth, death, old age and disease. Hiranyakasipu wanted to solve this in a materialistic way. But that is not possible. So in a negative way, he wanted that I shall not die on the land, I shall not die in the air, I shall not die in the water, I shall not be killed by any man-made weapon. In so many ways, negatively he thought that he has become immortal. But Krishna is so intelligent that keeping all the words or the blessings given by Lord Brahma to Hiranyakasipu, he killed him. Just like Hiranyakasipu wanted that he would not be killed either at day or in night. So Hiranyakasipu was killed neither at day and neither in night, but just in the beginning of evening, which is neither day nor night. Then he wanted that he shall not be killed in the air, in the water, or in the land. So Hiranyakasipu was killed on the lap of the Lord. So he wanted that he would not be killed by any weapons made by man. So Lord killed him with his nails. Yes. Tabakara kamalabari nakhamadbhuta singham Dalita Hiranyakasipu tanu bhringam
Kesavadhita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hari. So we cannot cheat God. That is not possible. However scientifically we may be advanced, God is always more intelligent than ourselves. We should always remember. So that is the difference between demon and devotee. Devotee knows that God is great. I am His eternal servant. So he remains a humble servant of Krishna. Therefore he has no danger. Even if he has danger, he will be saved. Krishna says in the Bhagavad Gita, Kaunteya pratijanihi name bhakta pranasat. Kaunteya pratijanihi, Arjuna, you can declare it all over the world, that anyone who has taken shelter at my lotus feet, become devotee, he will never be vanquished. Aham tva sarva pape bhamokvayasami masu. So these are the assurances. But the atheist class of men like Hiranyakasipu cannot understand this. That is the defect. They challenge always God. The dissension between the father and the son was that the son was believer in God, Krishna, and the father was not. So, at the end, the father saw what is God in the form of death. At that time he could not save him. So that is the difference between theist and atheist. The atheist always challenges, where is God? Can you show me? Well, you will see. Not now, but at the maturation of your all sinful activities. When death will come, you will see. This is going on. It is very instructive lesson. Prahlada Maharaj, now it is getting late, otherwise I would have recited some of the verses recited by Sri Prahlada Maharaj. Prahlada Maharaj is one of our gurus. There are 12 gurus or Mahajan. Swayambhu, Narada, Shambhu, Kumara, Kapila, Mano, Prahlada, Janaka, Bhishma, Bali, Vaiyasaki, Vayam. Actually, if we want to make progress in spiritual life, we have to follow the Mahajans, the great personalities. They are mentioned in the Shastras. Swayambhu, Narada, Shambhu. Shambhu means Brahma. Lord Brahma is Swayambhu. Without father and mother, he became manifest. Therefore his name is Swayambhu. Of course his father is Narayana, but not in the usual way. Therefore his name is Swayambhu Narada. Narada Muni is also one of the Mahajans. And Shambhu, Lord Shiva, Kapila, Kapilidev, the son of Devahiti. Swayambhu, Narada, Shambhu, Kapila, Mano, and Prahlada Maharaj. Prahlada Maharaj is our guru in the disciplic succession. So, Mahajana Jina Gatasya Pantha, Dharmasya Tattanga Nihitam Guhaya, Mahajana Jina Gatasya Pantha. We cannot chalk out what is the path of religion. It is very difficult to find out because there are many different scriptures and there are many philosophers. Nasu Munijjasya Matang na Bhinnam. Each philosopher has got different opinion. So how to get real path of religious way? That is recommended in the Shastra, that Mahajana Jina Gatasya Pantha. You have to follow the footsteps of great personalities, and Prahlada Maharaj is one of them. So, Prahlada Maharaj was born in a demon's family. His father was a demon. Prahlada Maharaj used to address his father as Asura Varja, the best of the demons. You have seen, he was patting his son, my dear son, do like this, do like that. Tell me what you have learned, the best thing. Prahlada Maharaj said,
tat sadhu manne asuravarjatihina. The demon never said, my dear father, my dear, the best of the demons. Tat sadhu manne, I think that is very nice. What is that? Hityatmughatam grihanda kupam vanangato jad hrimasreta. That this worldly life, materialistic life, is self-killing just like a dark well. So one should give it up and go to the forest and take shelter of Krishna. That is the best way of life. So his father became very angry. So the atheist and the theist, they will never agree. But theist also never will submit to the atheist. This is the principle. Prahlada Maharaj was put into so many troubles by his father, but he never forgot chanting Namo Bhagavate Vasudevaya Namah. He never forgot. So we should take lessons from this story that even in dangerous position, we should not be forgetful of Krishna. Krishna will save us. It is said in the Bhagavad Gita, Janglabdha chaparangla mannate nadhikanga tataha jasmin sthite gurunapi dukkhena na vichalati. Krishna consciousness is so nice that if one gets Krishna consciousness, janglabdha, chaparangalabham, aparangalabham, any other benefit or gain is never considered. This is so nice. We are hankering after getting this, that, so many things. They. But as soon as you get Krishna consciousness, you will be satisfied. As Dhruva Maharaj said, Shamin Kritathosmi Varangana Jaj. Just like Prahlada Maharaj. He was offered all benediction, my dear Prahlada. Whatever you like, you can ask. He never asked anything. But he was so kind. That is the example of a Vaishnava son in the family. Despite so much troubles given by his father, still he begged from Nrsimhadeva, my Lord, my father has committed so many offences, kindly give him liberation. He did not ask anything for himself. So Nrsimhadeva immediately said, why do you speak of your father? Your father's father, his father, 14 generations all liberated. Because a son like you is in this family. So, this is the benefit. If a son becomes a pure Vaishnava, devotee, he can deliver 14 generations. That is a special prerogative. Because he is born in a certain family. So, what we can give service to the family, nation, materially. If we become devotee, we can give best service to the nation, to the family, to the humanity. That is the philosophy. So, our Krishna consciousness movement is preaching this philosophy that you take to Krishna consciousness, your life will be perfect. And the method is very simple. There is no secrecy. Just like this evening I was talking with a boy. He has got a mantra, very secret. But we say we have no secret mantra. Our mantra, Hare Krishna, is open to everyone. Why it should be secret? If by chanting Hare Krishna mantra, we can approach God, the Supreme Personality of Godhead, why it should remain secret? It should be distributed like anything so that everyone can go. So there is no secrecy. The secret mantra we don't approve. It must be very open. There is no secret. The Shastra never says the mantra can be secret. Harinama, Harinama, Harinama iva kevalam kalau nastiva, nastiva, nastiva gadaganda. In this age of Kali, Kali means the age of quarrel, age of misunderstanding, age of disagreement. So in this age, it is very difficult to come to the right conclusion by philosophy and other methods. Therefore, in this Shastra, it has been openly declared,
Hare Nam, Iva Kevalam, Kalau Nasti, Gatinannatha. Three times means Jagadana Tapakriya. There are many other things. Meditation, sacrifices, worship in the temple. So, in this age, all these things are impossible to be performed. But even a child can chant Hare Krishna Mahamantra. That is proved here. Whenever there is Hare Krishna Mahamantra, even the child can take part, old man can take part. So this is the only method for God realization. There is no expenditure, but the gain is very, very great. That was the teaching of Sri Prahlada Maharaj, and we are following his footsteps. Let us stick to his principle, Mahajana Jina Gatasya Pantha, and thus become more and more advanced in Krishna consciousness. Thank you very much. श्रील प्रभुपाद से ये नरसिम्हा चतुर्दशी के ऊपर का एक क्लास था। तो शुरू में प्रभुपाद बता रहे थे कि इस दुनिया में जो आस्तिक और नास्तिक इन दोनों में बहुत संघर्ष होता है, तो इसको कैसे प्रभुपाद ने समझाया। देयर इज ऑलवेज स्ट्रगल बिटवीन एथिस्ट एंड थीस्ट। तो प्रभुपाद ने प्रहलाद महाराज का भी उदाहरण दिया कि क्या हो गया प्रहलाद महाराज ने जैसे भक्ति चालू किया तो प्रभुपाद कह रहे थे कि इस दुनिया में हमेशा आस्तिक और नास्तिक में संघर्ष रहेगा। इतना ही नहीं कि भगवान जब आए तभी भी उनके खिलाफ बहुत सारे दैत्य थे। और प्रभुपाद बोले थे जैसे ही प्रहलाद महाराज ने भक्ति करना चालू किया तो उसको बहुत उनके पिताजी ने मारने का प्रयास किया। हाँ, तो प्रभुपाद कह रहे थे जैसे कोई कृष्ण भावनामृत बनता है, ही विल फाइंड मेनी एनिमीज, बहुत सारे अभी क्या है जो शत्रु बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रभुपाद कह रहे थे वर्ल्ड इज फुल ऑफ डीमंस। तो बहुत सारे इधर क्या है ये असुर जैसे लोग रहेंगे। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जैसे भक्ति चालू क्या हो गया कि उनको भी बहुत सारे अभी जैसे पिता के रूप में बहुत सारे विघ्न आए थे। हरि बोल। ओके। और प्रभुपाद कह रहे थे जब भगवान स्वयं भी आते हैं तभी भी क्या है उनके भी खिलाफ बहुत सारे इस प्रकार के असुर खड़े रहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि कैसे जब जो उनके मामा थे कंस वो भी मारने के लिए रेडी हो गए, फिर बहुत सारे असुरों को कृष्ण को मारना पड़ा। तो प्रभुपाद कह रहे थे डीमंस गॉडलेस सोसाइटी दे सिंपली वांट टू किल गॉड। तो उनको क्या है सिर्फ भगवान का नाश करना है, इस प्रकार से प्रभुपाद कह रहे थे। ओके। फिर आगे प्रभुपाद ने कहा कि ये आसुरिक या नास्तिक एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, तो इनकी धारणा क्या रहती है। जो नास्तिक रहते हैं उनकी धारणा क्या रहती है, व्हाट इज देयर फिलॉसफी। यस आयुष। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रभुपाद इसमें ये कह रहे थे कि जो नास्तिक सिविलाइजेशंस वाले लोग हैं उनकी धारणा ये रहती है कि लिव फॉर एवर एंड बेसिकली डू सेंस ग्रेटिफिकेशन। हाँ, वी शैल लिव फॉर एवर एंड एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन मोर एंड मोर। तो इस प्रकार की उनकी धारणा रहती है। हरि बोल। फिर आगे प्रभुपाद कह रहे थे कि जब हिरण्यकशिपु ने अमरत्व का वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी भी नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी भी खुद ही अमर नहीं है, उनको भी मृत्यु आता है। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि
सही जो समस्या इस दुनिया में ये क्या है? सिमरू. The real problem is Janma Mrityu Jara Vyadhi. हरि बोल. तो हिरण्यकशिपु ये 4 प्रॉब्लम को भौतिक तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे. प्रभुपाद कह रहे थे हिरण्यकशिपु वाज ट्राइंग थ्रू मटेरियलिस्टिक वे, लेकिन क्या है ये असंभव है. तो अगर कोई भगवान को चीट, समवन इज ट्राइंग टू चीट गॉड, ये संभव नहीं है. इसको कैसे प्रभुपाद ने समझाया? यस. हिरण्यकशिपु ने बहुत सारे कंडीशन रख दिए कि मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, मैं जल में ना मरूं, पृथ्वी पर ना मरूं, हवा में ना मरूं. तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन रख दिए. तो भगवान ने ये सारे कंडीशन जो ब्रह्मा जी ने उसको वर दे दिए थे, सारे कंडीशन रखते हुए हिरण्यकशिपु को मारा. जैसे उसको जल में या हवा में या पृथ्वी पे नहीं, अपने उस पर अपने गोद में रख के मारा. और उसको दिन में रात में की जगह जब शाम जब स्टार्ट हो रहा था तब मारा. तो सारे कंडीशन भगवान ने रख दिए. तो जैसे पहले उसमें श्लोक आता है मृत्यु सर्वस हरश्च हम, तो ये भगवान ने प्रूव करके दिखाया. हरि बोल. ओके. तो भक्त और असुर इनमें क्या फर्क है? What is the difference between devotee and demon? What devotee thinks and what is demon's thought? Okay, yes, Mataji. A devotee knows that God is great and I am a humble servant of God. And so he's and also Krishna, he knows that Krishna assures Kaunteya prati janihi name bhaktiya praneshati, so he knows that he is safe. While on the other hand, atheists, they challenge, show me God. Where is God? If God is there, then show me. So this is the mentality of atheist. Yes. Hari Bo. Okay. तो जो असुर है वो भगवान को देख सकते हैं क्या? वदेरास तीर्थ प्रभु. और कैसे देख सकते हैं वो भी बताएं, अगर देख सकते हैं तो. गिविंग द एग्जांपल ऑफ हिरण्यकशिपु, प्रभुपाद बता रहे थे. हाँ. यस. दैट ही वाज अनेबल टू सी बट लॉर्ड प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज डेथ एट द एंड, एंड दैट्स हाउ इन द फॉर्म ऑफ डेथ दे विल सी. हाँ. तो प्रभुपाद कह रहे थे जब उनके पाप का जो कार्य है ये घड़ा भर जाता है क्या नहीं, द मैच्योरेशन ऑफ ऑल सिंफुल एक्टिविटीज, डेथ विल कम एंड देन ही विल सी द गॉड. तो इस प्रकार से वो मृत्यु के रूप में भगवान को देखते हैं जो असुर है. हरि वो. ओके. तो अभी जो भक्त है उनको भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो उनको क्या करना चाहिए? Anyone else? Yes, yes, here. महाजनों का पाथ चूज करना चाहिए. महाजनों का पाथ चूज करना चाहिए. हाँ. तो उनको क्या करना है? सिंपली दे हैव टू फॉलो महाजनास. हरि वो. क्यों? क्योंकि प्रभुपाद कह रहे थे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द राइट पाथ. व्हाट इज़ द पाथ ऑफ रिलीजन? क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि ये पथ को ढूंढना. इसलिए हमको क्या करना है? सीधा महाजनों को फॉलो करना है. ओके. फिर प्रभुपाद ने प्रहलाद महाराज का ये थोड़ा कथा बताया और प्रभुपाद ने कहा कि हमारे लिए ये सीख है प्रहलाद महाराज के जीवन से, अगर विघ्न आ गए तो क्या करना चाहिए और कैसे प्रभुपाद ने इसको समझा. When there is danger, what did Prahlad Maharaj do? And we have to also do the same thing.
यस कुमार गौरंग। प्रभुपाद बोल रहे थे कि जैसे प्रहलाद महाराज ने भगवान का स्मरण किया तो हमें भी जितने भी कठिनाइयाँ आती है भगवान का स्मरण छोड़ना नहीं है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। प्रभुपाद कह रहे थे क्या है कि प्रहलाद महाराज कभी भूले नहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ना वो जप भूले ना जप करना भूले। तो प्रभुपाद कह रहे थे वी शुड टेक लेसन फ्रॉम द स्टोरी दैट इवन इन डेंजरस पोजिशन, बहुत कठिनाई वाला भी अगर समस्या है, वी शुड नॉट बी फॉरगेटफुल ऑफ कृष्ण। हमने कृष्ण को भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्णा विल सेव अस, क्योंकि भगवान हमको बचाएंगे। हरि बोल। तो आज प्रश्न का मैं शायद जल्दी क्लास खत्म हो सके, अंदर बताना पड़ेगा। फिर प्रभुपाद बता रहे थे कि जैसे प्रहलाद महाराज भक्त बने तो किस प्रकार से पूरा जो उनका कुल था उनके लिए फायदा हुआ। तो प्रभुपाद ने किस प्रकार बताया अगर कोई वैष्णव बनता है तो क्या क्या फायदे होते हैं घर में अगर। ओके माता जी को माता जी। मुझे तो एक याद आ रहा है कि प्रभुपाद बोले कि अगर कोई अपने फैमिली में वैष्णव बनता है तो पूरा देश या सोसाइटी या फैमिली के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो मीन्स हिज फैमिलीज 14 जनरेशंस विल बी डिलीवर्ड, लिबरेटेड। हाँ, तो वो प्रभुपाद ने कहा कि पहला तो क्या है 14 जो उनके पूर्वज 14 जनरेशंस ऑल गेट लिबरेटेड। फिर प्रभुपाद ने कहा कि ही कैन गिव बेस्ट सर्विस टू फैमिली नेशंस, मटेरियली भी नहीं तो क्या है आध्यात्मिक दृष्टि भी। तो इस दोनों तरीके से अगर सिर्फ वैष्णव कोई बन गया तो ये फायदा होता है। हरि बोल। ओके, प्रभुपाद कह रहे थे कि मुझे एक कोई तो स्टूडेंट आके मिला और वो कह रहे थे कि मुझे मंत्र मिला है लेकिन ये सीक्रेट है। तो क्या मंत्र सीक्रेट हो सकता है? क्या शास्त्र सीक्रेट मंत्र देते हैं या नहीं? इसको कैसे समझाए प्रभुपाद? यस ठीक है। यस लोकेश्वर कृष्ण। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि कोई सीक्रेट मंत्र नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र ओपन है जो सब कोई भी ले सकता है, तो कोई भी बोल सकता है। और शास्त्र क्यों नहीं देते फिर सीक्रेट मंत्र? प्रभुपाद ने 2 कारण बताए। शास्त्र इसलिए नहीं देते क्योंकि वो चाहते हैं कि सब भगवान के पास वापस चले जाएं। ओके इन जनरल। और प्रभुपाद ने कारण बताया क्यों शास्त्र, या एक इसमें बताया कि शास्त्र इसलिए ओपन रखते हैं, इसको सीक्रेट नहीं रखते। क्योंकि आखिरी प्रश्न है। प्रभुपाद कह रहे थे अगर किसी का भला हो रहा है तो वाई शुड इट बी सीक्रेट? ओके, शास्त्र के हिसाब से क्या है? ओके यस माता। एक तो प्रभुपाद ने यही बोला था कि इफ़ वी कैन अप्रोच गॉड बाय चैंटिंग मंत्रा वाई इट शुड बी सीक्रेट। और प्रभुपाद ने बताया कि अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अप्रोच। यज्ञ, ध्यान, तप, क्रिया, मेडिटेशन, सेक्रीफाइसेस, सो मैनी थिंग्स वी नीड टू डू। एंड चैंटिंग मंत्रा इवन अ चाइल्ड कैन टेक पार्ट, एन ओल्ड मैन कैन टेक पार्ट, सो वाई इट शुड बी सीक्रेट। तो प्रभुपाद ने कहा कि हरे नाम यस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम टू राइट कंक्लूजन बाय फिलोसॉफी एंड अदर मेथड्स। तो सारे पद्धति करके हरि नाम तक या चैंटिंग तक आना है बहुत मुश्किल है। तो इसलिए उसको सीक्रेट नहीं रखते, शास्त्र उसको ओपनली डिक्लेयर करते हैं। और वो प्रभुपाद ने कहा हरे नाम एव केवलम, बोला वो सी से हरि बोल। जय प्रभुपादा, जय प्रभुपादा,
प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।